Hi all, welcome to Examshala. In this video, we are going to see some important news and editorial analysis of 2nd of April 2021. But before getting started, kindly do like, share and subscribe our channel on YouTube. Follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Now let's move on to the main video. So today is 2nd of April, when all the cricket lovers, and if you have a hobby of cricket and you have written or you want to fill your form एज अ क्रिकेट एज अ हॉबी, अगर आप अपनी क्रिकेट एज अ हॉबी को इंटरव्यू फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, देन यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस दैट 2nd of April. Why 2nd of April is important? Because it is the 10th anniversary. 2011, on 2nd of April, this man hit a shot in the night at Wankhede Stadium to lift the World Cup after 28 years. Initially it was in 1983 by Kapil Dev. So this is a remarkable day for Indian cricket. Now some facts. अब इससे क्या फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, स्पेशली जो अभी जीपीएससी डीवाईओसी की एग्ज़ाम होने वाली है उसके अंदर, या आने वाले जीपीएससी एग्ज़ाम्स के अंदर, या एसटीआई, पीआई, एएसआई, जो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं. दीज क्वेश्चंस कैन बी: हु वाज द मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस मैच? सो मैन ऑफ द मैच वाज दिस पर्सन. Who was the man of the series or the player of the series? So player of the series was this person, Yuvraj Singh. And who scored maximum runs? So this person, Gautam Gambhir, 97 runs, and he got bowled out. After that, Dhoni comes into play. Yuvraj comes into play. And this was 3 important things. So 28 साल के बाद हमने वर्ल्ड कप जीता. वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द मैच थे महेंद्र सिंह धोनी, सबसे ज़्यादा रन बनाए थे गौतम गंभीर, एंड man of the series, that is player of the series, was Yuvraj Singh. Okay, it was the last World Cup for whom? So Sachin Tendulkar as well as Virendra Sehwag and many other players like Harbhajan Singh also. Clear? So these things are important for the exam point of view, and as a cricket fan you should know this date. The 2nd of April is nothing but the date of India lifting the World Cup after 28 years. Okay. Second news again from Gujarat is, recently the Gujarat government has passed a new bill, that is Ayurvedic Institution Bill of 2021, and scrapped the old bill of 1965. Now why it has been done? इसे क्यों किया गया है? तो रिसेंटली क्या हुआ था कि 2019-20 में केंद्र सरकार, that is the Union Parliament, had declared 3 Ayurvedic Institutes of Jamnagar district. Now this is very important. जामनगर डिस्ट्रिक्ट के 3 आयुर्वेदिक कॉलेजेस को, कॉलेजेस के नाम क्या है दैट डजंट नीड टू नो, बट 3 आयुर्वेदिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को नेशनल इम्पोर्टेंस का तमगा दिया था यूनियन पार्लियामेंट ने. उसी से प्रोत्साहित होकर गवर्नमेंट ने चाहा, गुजरात सरकार ये चाह रही है कि हम और ज़्यादा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस बनाएं, और उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, एस्टैब्लिशमेंट, प्रोगोल, डिटर्मिनेशन, सर्टिफिकेशन एक्सेट्रा को और ईज़ बनाने के लिए, और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हमने नया लॉ, द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ, दैट इज़ द न्यू आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बिल ऑफ 2021, which is nothing but a modification of the old bill of 1965. So the question can be कि क्या ये पहला बिल है? So no, it is not the first bill. इससे पहले भी 1965 में ये बिल आ चुका था, उसका ये एक मॉडिफिकेशन है. क्यों मॉडिफिकेशन किया गया है? इन ऑर्डर टू कम्पेंसेट. So 3 universities of Jamnagar has been designated by the parliament as an institution of national importance. उससे प्रोत्साहन लेकर और उससे प्रोत्साहन लेकर, that is taking inspiration from these laws, the government has decided to ensure more and more Ayurvedic colleges and universities in गुजरात. Now जब आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं. आयुर्वेद क्या होता है? तो आयुर्वेद नथिंग, तो ओरिजिनली अथर्ववेद और चरक और सुश्रुत संहिता को मिलाकर एक आयुर्विज्ञान बना था. इट इज आयु मीन्स एज, सो अ वेदा और बुक दैट डील्स विद इंक्रीजिंग एंड हार्नेसिंग द आयु ऑफ अ पर्सन, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ निश्चर, यानी कि नैसर योग. ठीक है, नैसर योगी मीन्स ओरिजिनल प्रत्योग, दैट इज इनहेरेंट मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ इनहेरेंट ट्रीटमेंट, यानी कि ऐसे नेचुरल ट्रीटमेंट्स यूजिंग द नेचुरल एलिमेंट्स
not synthesizing anything, natural elements, natural philosophy, natural moves, healing the body from within, inside the body, not just from the outside, using special mantras, Vedas, exercises, position, controlling the breaths, ध्यान, प्राणायाम, नैसर योग, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके आयुर्वेद इस चीज़ पर, सो इट बेसिकली फोकसेस ऑन द improving the quality of human life and human health rather than a curating it. So it is more of a preventive technology or technique. So we need, it is more preventive rather than curative. So we know that in medical field there are two types of treatment. One is preventive. प्रिवेंटिव मीन्स कुछ बीमारी आपको ना हो, कोई डिजीज़ आपको ना हो, इसके लिए अपनी बॉडी की इम्यूनिटी, अदर फंक्शंस, अदर सिस्टम्स, मेंटल, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, सीरम सिस्टम, रेस्पॉन्स सिस्टम को बेटर बनाते हैं. दूसरा होता है कि कोई बीमारी अगर आपको हो गई तो फिर उसको क्योर करने के लिए जो भी टेक्निक होती है दैट इज़ क्यूरेटिव. सो आयुर्वेद इज़ मोर फोकसिंग ऑन द प्रिवेंटिव टेक्निक. सो मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग, मेक योर एनवायरमेंट स्ट्रॉन्ग, ईट राइट, स्लीप राइट, and don't let anything happen to your body so that you will never need a curative care. So this is the basic philosophy of Ayurveda. Next, another news from the Gujarat government is recently in the assembly, the government irrigation department or the irrigation minister has accepted that Narmada has spoken, the Narmada canal, that is a canal which takes water from the Sardar Sarovar to various parts of the drought regions of Gujarat, that is Kutch district, Bhuj district, central Gujarat district, even in the Rajkot district some areas. So using this Sardar Sarovar, a Narmada canal, the water of Narmada is sent to the various remote areas of Gujarat. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि पिछले 2 सालों में 100 बार वो कैनल कहीं ना कहीं से टूट गया है. अब उसके टूटने के प्रमुख कारण क्या क्या बताए गए हैं? तो पहला तो फॉल्टी मटेरियल्स, करप्शंस, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट कारण, that is one important reason is being introduced, and that is farmers are drilling those canals. So this is a canal and water is flowing to them, and if somebody is having his farm here, what they are doing is they are drilling the canal, they are drilling boring a pipe into the canal to take water whenever they required without paying any fees. So there is an irrigation charge, irrigation fees that is paid by the farmers who are taking the land water to the state department, state revenue department. But in order to avoid those fees, what they are doing, they are simply making a boring below the canal and they are taking the water, not taking a proper connection of the canal. And this is what happens in the remote area. इसकी चेकिंग नहीं हो रही है, उसमें वो लोग बोरिंग कर दे रहे हैं. अब बोरिंग करने से क्या हो रहा है, दैट जो एम्बैंकमेंट है, द मटेरियल, देन देयर इज अ फॉल्ट इन द फ्लो ऑफ द बाउंड्रीज एंड दिस फ्लोज and this leads to the break in the canal and all of the water flows to the nearby farms, and in spite of helping it, it is actually destroying the nearby crops, nearby farm products, etc. So when you are writing some answer in mains and we are presenting your points, so there can be two aspects. One is, yes, there is a lack of infrastructure in irrigation, but even the people's participation is not up to that mark. So गवर्नमेंट की आप कमियों को दिखाना ज़रूरी है, दिखा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कमी है, लेकिन पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोग भी इतना अच्छे से बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. पीपल आर ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग इन दिस इरीगेशन. वाई? बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑफ देयर ओन प्रॉफिट्स. दे आर मेकिंग बोर in the canals, they are taking the water for granted, and what happened in that, in lieu taking a granted process, we are weakening the whole infrastructure, and those person who are needy, सारा कैनल का पानी अगर पहले ही बह जाएगा तो जहाँ उसको जाना है, वेयर इट नीड्स टू बी रीच्ड, वो नहीं पहुँचेगा. अगेन जब फसल बर्बाद हो गई, पानी बह गया, तो उसका मुआवजा कौन देती है? सरकार देती है. सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स पेयर का पैसा. अगेन, और वो कैनल टूट गई, उसको बनाने के लिए भी कौन बनाएगा? सरकार. तो किसका पैसा बर्बाद हो रहा है? सो ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, एंड स्टिल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट वर्किंग. वाई? जस्ट देर आर सम गवर्नमेंट deficiency, there are some administrative deficiency, but there are also people deficiency as well. People are not supporting it, people are not cooperating in the development, people are just greedy about their own needs, and that is why there are some hindrance to development. So we cannot use directly this example, but we can use as a case study, we can use it in quoting certain facts that yes, governments need to do something, but people also need to conserve these things. People should also be supportive in the way.
ओके, सो सारा काम सरकार का नहीं होता है, लोगों को भी आगे बढ़ चढ़ कर काम करना होता है। जो फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट ने बनाई है, जो दे रही हैं, उनका इम्प्रूवमेंट करना होता है। जस्ट बिकॉज देयर ओन नीड फॉर देयर ओन ग्रीड, दे कैन नॉट मेक द होल सिस्टम फेल। And this is one of the reasons, in spite of having a less irrigation or sinchai infrastructure in our country, we are still, the people are not supporting it, people are using for their own benefit, and this is further downgrading the irrigation infrastructure in our country. Next news is the Sabarmati River Development Fund project. So what is important from exam point of view is who is developing it. So it is developed by the Ahmedabad Municipal Corporation, which has sanctioned a budget of 1005 यानी 1005 crore रुपये for the development of this Ahmedabad phase 2. तो एक फेज़ आपको पता है कि वो जो बापू नगर से जो आश्रम रोड है, वहाँ से एक फेज़ that has been developed. Next phase has been trying to enlarge this concept and make a new CBD. Now what is CBD? CBD is nothing but a central business district. So this is the center part of a city where all the government institutions are established, and this leads to the establishment of other markets, other service area, and then it becomes the center of the city. जब वहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, फिर वहाँ पे अलग अलग मार्केट्स होंगी, the people will come, so there will be travel infrastructure, tourism infrastructure, okay, and then they will come and they will live, so they will accommodation infrastructure. When they will live, they will eat something, there will restaurants, schools, education. So this will whole area of the central business district. So they are trying to develop a new CBD around this riverfront for the further development of the Ahmedabad city and the extension of the central business district and extension of the Sabarmati riverfront, whom by Sabarmati Riverfront Development Corporation Limited. So there are two bodies, AMC and SFRDCL, with a budget of 1,105 crores. Next important news is superstar Rajinikanth gets cinema's highest award. So just like the Oscars of the world, Indian cinema's highest award is Dada Saheb Phalke. He was the one of the pioneer of establishing the Indian theatre, Indian cinema. उन्हीं के नाम पे इंडिया सिनेमा का जो highest contribution in the Indian cinema, the people are being awarded. Recently Amitabh Bachchan was awarded by it, and so now Shri Rajinikanth ji is being awarded by the central government or by the specific Ministry of Information and Broadcasting. And who is the minister? So the minister is none other than Prakash Javadekar, has announced that he will get what? Dada Saheb Phalke Award. Now these types of question has been asked in GPSC recently, especially about the national awards. Okay, Kirti Suresh वाला question पूछा गया था. Then this year's national award also, Kangana, Dhanush. Okay, so these kinds of awards should be done for especially for one day exams, and PSI, ASI, DYSO, GPSC class 1 to even ask such questions. Not in UPSC, but yes, definitely in GPSC it has been asked. So things for our point of view important is the original name of Rajinikanth is not Rajinikanth, it is Shivaji Raya Gaikwad. So he is a Marathi living in the Karnataka, and he was a bus conductor, as you all know, and he got settled in Tamil Nadu. So if you also want to use some points against regionalism, ठीक है, क्षेत्रवाद के खिलाफ अगर कुछ पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं, then you can use these words. So a Marathi speaking people can become a superstar of Tamil Nadu, and he can influence elections also. And recently there has been an election announced in Tamil Nadu, and in order to vote the voters, the central government BJP, which is in alliance with AIADMK, okay, Dravid Munnetra Kazhagam, All India Anna Dravid Munnetra Kazhagam. So there are two parties in Tamil Nadu, that is DMK and AIADMK. AIADMK is All India Anna Dravid Munnetra Kazhagam, and it is led by currently two leaders, the Chief Minister EPS Edappi Palaniswamy and his deputy OPS O Paneerselvam. The opposition party is led by DMK, which was established by Kalaignar K. Karunanidhi, and his son M.K. Stalin is currently the chief minister candidate. His sister Kanimoji was famous, or was rather infamous, was in highlight in the 2G scam case. Mr. A. Raja is also in the party of, was famous in a 2G scam. ठीक है, दयानिधि मारन
the Spectrum cases. So these all people, these are stalwarts of corruption are in this DMK party, though they have been released by the courts in light of no evidence, no specific evidence के case की वजह से they have been released, but they belong to the party of DMK, and BJP is the ally of AIADMK, and so to influence the election, the opposition may say that he has been given the Dadasaheb Phalke award just to appease the Tamil people, the Tamil Nadu election. So this you can also write the use of central awards and central schemes in order to affect the voters, also part of a politics. Next important editorial is Net Zero Climate Injustice. So this is a very important article written by Ravi Shankar Prasad. No, he is not a minister, he is an IAS officer, and he has a good grasp on environmental issues and global politics on environmental issues. In this editorial he has used Aristotle's philosophy. एरिस्टोटल की फ़िलॉसफी यूज़ करके उन्होंने एनवायरमेंटल चेंज और करंटली एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है, और उन्होंने 3 तरह के जस्टिस. सो एरिस्टोटल टॉट अबाउट 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस. वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, अनदर इज़ कम्यूटेटिव जस्टिस, एंड थर्ड इज़ करेक्टिव जस्टिस. सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मीन्स इस तरह का न्याय होना चाहिए कि हर व्यक्ति को समान रूप से और उसके ऊपर सेम बर्डन है. दैट मीन्स जो हमारे मनुस्मृति में भी था, मनुस्मृति का भी कॉन्सेप्ट यही था कि अगर कोई ब्राह्मण यानी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई गलती करता है तो उससे थोड़ी सी कम सज़ा मिलनी चाहिए, या जो मृत्यु दंड नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से क्या होगा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज से लुप्त हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट अलग अलग सोसाइटी में भी थे कि हर व्यक्ति को, समाज के लोगों को, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को उनके इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस को देखते हुए सज़ा या उनके ऊपर जो डिग्री है, जस्टिस है, न्याय है, उस तरह से मिलना चाहिए. तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि देयर 2 पीपल्स, वन इज़ पुअर एंड वन इज़ रिच, एंड बोथ आर कमिटिंग क्राइम. सपोज करो दैट द क्राइम इज़ ऑफ नॉट वेयरिंग अ मास्क. So a poor people should not be fined, rather he should be given a mask instead, and the rich people who is wealthy enough, who has resources, who has knowledge, and still he is making a mistake, then he should be fined more in comparison to a poor people, and rather he will be given a mask. So based on this distributive justice, there was a concept in the world climate change action that the rich countries or the developed countries who has developed by using or consuming the resources, जिन्होंने अपना डेवलपमेंट तो कर लिया, अपने हिस्से के रिसोर्स यूज़ कर लिए, जितना कार्बन जलाना था, फॉसिल फ्यूल जलाना था, सब जला लिया, और अब वो डेवलप्ड हो गए. तो जब वो डेवलप्ड हो गए और अब आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हो और आप चाहते हो कि देयर शुड बी रिडक्शन इन द यूज़ ऑफ थर्मल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल एनर्जी, एंड यू वांट ऑल ऑफ द वर्ल्ड टू रिड्यूस इट. नाउ व्हाट अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज दे हैव नॉट यूज्ड इट and they are in the course of using it, and if they will not use it, their economy will not grow, their economic power will not grow, and they will become a mere importer. So developed country के पास मैन्युफैक्चरिंग है, पैसे हैं, they have more science and technology and research by using the only. ठीक है, तो in 16th century, 17th, 18th, 19th, इन 300 सालों से these countries have used it and they have developed the alternative source. They have so much amount of money, they have less population, and so they can shift to a newer method of production. But what about the LDC countries, least developed countries, or the developing countries like India, China? So what about them? So there was a concept decided that everybody should pay or everybody should move towards the climate change protection, but it will be funded by the rich countries to the developing countries. So developing country will definitely will low down the use of fossil fuel as well as coal and thermal energy and other conventional sources of energy as a source of energy, but in that cost the developed countries will help them economically to develop a new environment friendly energy needs and alternative energy. but ऐसा हो नहीं रहा है. ठीक है, सो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट है कि भाई हर व्यक्ति को उसके हिसाब से उसके इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, यानी कोई बड़ा आदमी अगर कोई गलती करता है तो वो एक बड़ी गलती करता है, इसलिए उसको सज़ा ज़्यादा मिलनी चाहिए, बजाय उसके कोई छोटा बच्चा गलती कर रहा है तो ही कैन बी रिलीज्ड ऑफ, ही कैन बी पॉइज्ड ऑफ. सो बेस्ड ऑन दिस द climate change funding should be distributed on the principles of equity. Now there is a new concept of net zero emission. Now what is net zero emission? Net zero emission is nothing but it is a concept of the number of amount of fossil fuel we are using and the carbon we are increasing, or the carbon we are emitting due to this
it should also be maintained by other processes like carbon sequestration, carbon drainage, carbon storage, okay, by implanting plants also. सो जितना कार्बन हम यूज़ कर रहे हैं, जितना कार्बन हमारे एनर्जी यूज़ की वजह से जो है सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में जो है वो रिलीज़ हो रहा है, उतना ही कार्बन हमको सेव करना है, उतना ही कार्बन हमको सिक्वेचराइज करना है. दैट इज़ कार्बन sequestration, carbon sink methods by including plants, moving to alternate energies. So this is what, so the number of emission will be equal to the number of storage, and this will be a net zero. So this concept has been running, and China has said that by 2050 we will move to the net zero emission. But this is actually not the way, because what is happening, the developed countries, जो बड़े बड़े डेवलप्ड देश होते हैं, वो बड़े बड़े वादे कर तो देते हैं लेकिन बाद में मुकर जाते हैं. जस्ट लाइक द USA, द प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम मिस्टर बराक ओबामा साइंड द पेरिस डील एंड डोनाल्ड ट्रम्प केम टू पावर एंड ही रिजेक्टेड इट. सिमिलरली चाइना के साथ भी यही हो रहा है. अभी तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है 2050 तक एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि उन्हें बस अच्छी बातें करके यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील साइन करनी है. अब ट्रेड डील साइन करनी है तो उनके लोगों में गुडविल बनाना होगा. गुडविल बनाने के क्या करेंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज. तो ये सिर्फ दावे के लिए कर रहे हैं, ये एक्चुअली में करने वाले नहीं है. और इसकी वजह से क्या होगा, द इंडिया विल बी फोर्स्ड. भाई चाइना अगर कर रहा है तो आप भी करिए. बट चाइना और अदर कंट्रीज़ के पास दे हैव मनी, दे हैव रिसोर्सेज, बट इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. एंड इफ़ वी विल बी फोर्स्ड टू मूव or to reduce the thermal energy and the fossil fuel energy, then it will be a huge loss to our economy, and this is a dangerous thing which China is planning with the other countries. So it is, the title of giving net zero emission by China is just to appease the Americans as well as the Europeans for getting a proper European Union deal, and it violates the principle of common but differentiated responsibilities. That's what I told you, that is, there is a common responsibility, but it is also differentiated. That is, it is more for the developed countries and less for the developing countries based on their economic as well as the scientific positions. So it is a violating of this, and India has always been supporter of CBDR, that is common but differential responsibilities and respective capabilities. Second justice is talked about the commutative justice. That is, it requires fairness in all type of agreements. Now what happened, that the first world agreed to pay money. जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, दैट इज़ द डेवलप कंट्रीज़, ने एग्री किया कि विल पे यू मनी टू द डेवलपिंग कंट्रीज़. आप अपने जो फॉसिल फ्यूल है, थर्मल फ्यूल को यूज़ करना बंद करिए, एंड वी विल पे यू मनी. बट एक्चुअली में अभी तक, यानी 2016 में जो पेरिस डील साइन हुई थी, उससे लेकर अभी तक एक भी पैसा उन्होंने दिया नहीं है. तो वो एक तरफ तो चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज पर हम काम करें, और दूसरी तरफ वो अपना पैसा खर्च भी नहीं करना चाहते हैं. और फिर वहाँ पे जो है अभी सेपरेटिज़म शुरू हो रहा है, प्रोटेक्शनिज्म इज राइजिंग. ओके, सो व्हेन द प्रोटेक्शनिज्म इज राइजिंग, इट इज़ अगेंस्ट द ग्लोबलिज्म, एंड दे आर नॉट trying to give money to the other country. They are not allowing the other people to work in their economy, and at the same time they want the lower and the developing countries to reduce the fossil fuel and the thermal energy, which is not at all synergy. Third is the corrective justice. Now giving punishment and fine to the people and compensation to the victim, but it is not happening because those countries who are developed has already used the fossil fuel energy in much of their need, but they are not being fined and people are equally fined. So इन तीन तरह के जस्टिस को यूज़ करके इन्होंने क्लाइमेट चेंज को एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया. यू नीड टू रीड दिस आर्टिकल फॉर कंप्लीट एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए नॉलेज. सो हियर द एनवायरमेंट as well as ethics has been linked. So it is very important for our ethics paper as well as environment paper. We can write about this. So this was all for today's lecture. We'll see you in the next video. Thank you. Bye bye. Jai Hind.